Good morning, students. Today topic is APTT, partial thromboplastin time or activated partial thromboplastin time. This test indicates the measuring of the efficacy of both intrinsic as well as common pathway. ये APT टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं सो डैट वी कैन चेक द मेजरिंग ऑफ हम जो मेजरमेंट है फैक्टर का जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में और कॉमन पाथवे में उन फैक्टर की वर्किंग को चेक करने के लिए हम एपीटी टेस्ट करते हैं. We do this APTT test to check the working of the intrinsic and common pathway factors. इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे फैक्टर की वर्किंग चेक करने के लिए हम करते हैं. नाउ दिस APT test also do to check the anticoagulant, that is heparin. We also use this test to check the working of anticoagulant heparin which is present in our blood. And the historical name of this APT test was calcium collating time. Now, in this APT test, first of all, you will collect the blood from the vein of patient. Then you mix that blood with the oxalate or citrate anticoagulant. Then you will separate that blood. You will separate the blood in centrifuge so that you can get the plasma from the blood. आपने क्या करना है, पहले ब्लड जो है वो कलेक्ट कर लेना वेन में से, देन उसके बाद आपने एंटीकोगुलेंट ऑक्सलेट या सिट्रेट ऐड करना है उसमें. आफ्टर एडिंग द सिट्रेट एंटीकोगुलेंट आपने फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है. आफ्टर सेंट्रीफ्यूजिंग यू विल गेट आपको क्या मिलेगा उसमें से, प्लाज्मा. नाउ विथ सेपरेशन ऑफ द प्लाज्मा now you perform the test, APT टेस्ट. सेपरेट करने के बाद आपने टेस्ट परफॉर्म करना है. We will use three chemicals in this test, APT test. First one is phospholipid, and second is calcium activator, and third is calcium. Okay, now you will add these three into the plasma, and after adding these three, immediately start the stopwatch and note the time of the clot formation. The time is measured until a clot forms. Time measure करोगे जब तक clot form नहीं हो जाता है. Now, the term partial means absence of the tissue factor. Tissue factors are involved in the extrinsic pathway, or we are not involving that extrinsic pathway in this test. We involve the intrinsic pathway and common pathway in this test, not extrinsic pathway. So excluding that extrinsic pathway for this test we call is partial thromboplastin time. Partial word is so that use. Now in this test you will add calcium, phospholipid and calcium to the plasma, and after you will observe the clot formation in your test tube. Now, first of all, for this test, you will mix the equal volume of the phospholipid and calcium reagent. Then, incubate this at 37 degrees Celsius for 1 minute. After that, in another tube, you will take the calcium chloride, and the amount of calcium chloride should be 0.1 ml, and you will also incubate that calcium chloride for 2 minutes, 1 to 2 minutes. Now you have two tubes, one with having the phospholipid and calcium mixture, and another tube having the calcium. Now in third one tube, which is having the plasma, now you will add the uh, uh, phospholipid and calcium mixture to the plasma. Then you will add the calcium
to the plasma. After adding both kaolin and phospholipid mixture and calcium, immediately start the stopwatch and note the time of clot formation. As soon as clot will form, you will stop the stopwatch and note the time. The normal range for this test should be 35 to 40 seconds, or you can say 25 to 39 seconds. Up to 40 seconds is sufficient for this. And you will use this iterated plasma for this test. So, interpretations means 25 to 39 seconds and up to 40 seconds. You can say up to 40 seconds is sufficient for this test. And we do this test to check the working of the coagulation factor that are first, second, fifth, eighth, ninth, 10th, 11th, and 12th. Deficiency of the factor 7th and 13th will not be detected with this APTT test. If there is prolonged APTT time, that means there will be deficiency of these factors, that are factor 12th, factor 11th, factor 9th, factor 8th, 10th, 5th, 2nd and so on. सो हम ये जो एपीटीटी टेस्ट है, ये हम इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे, ये दोनों जो पाथवे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे, इनमें जो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सभी की वर्किंग को चेक करने के लिए करते हैं कि हमारे ये फैक्टर हैं, दे आर प्रॉपर वर्कड और नॉट, वो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं. इसे हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्यों कहते हैं? पार्शियल मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ये जो टिश्यू फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा. We call this partial thromboplastin time because here in this test we are not involving this tissue factor. That is a part of extrinsic pathway. ये जो टिश्यू फैक्टर है इसको हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे इसमें. एंड अगर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हमारे पास नॉर्मल रेंज से अबव हो जाता है, ज़्यादा आ जाता है, दैट मीन्स कि हमारे पास ये फैक्टर्स की जो लिस्ट है, ये सभी फैक्टर्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी है. इनमें से किसी भी फैक्टर की डेफिशिएंसी हो सकती है आपके ब्लड में. और डॉक्टर डू दिस टेस्ट अलोंग विद दी पीटी टेस्ट. हमेशा वो क्या कहेंगे, पीटी के साथ साथ एपीटीटी भी करवाना है, दोनों, क्योंकि वी डू द पीटीटी टेस्ट to check the working of the extrinsic and common pathway and APT test for the working of intrinsic and common pathway. APTT में हम intrinsic और common लेते हैं और PT में हम extrinsic pathway लेते हैं. Thank you.